Okay, so very warm welcome to all the wonderful people on the channel Vedantu Commerce. कैसे हो सारे लोग? How is the preparation going on, guys? Write on hi in the chat box. Okay, so Sarvari, very good morning again सभी को. So let's start a session. This is the session for Menti Quiz. So those who really want to check their preparation, most welcome to all those people. And this particular session is for indefinite integration. So I do not know what's your preparation, but yes, by through these 10 questions, you can check where do you stand actually. Can you apply the concepts? Yes or no? Okay, so let's start. The code is 1113527. Sorry, 1113527. This is the code. Let me write down over here. 1113527. Okay, so share this video to your friends, this session to your friends, so that we can maximize our competition. Competition जितना ज़्यादा होगा बेटा, उतना ज़्यादा मज़ा आएगा क्वेश्चन लगाने में और उतना ज़्यादा आपको मालूम चलेगा what's your exact preparation stance. So I hope you have shared with the people, your mates, your class mates, your preparation mates, and your school mates, each and everyone. Fine. So let's start the quiz. We will talk about the enrollment program, why you should go for this enrollment program, why you should not. We will talk about the exact thing, how we will go for it, why we will go for it, and how we will go for it. Fine. But before we go ahead, write down this code ADAPRO. ये कोड आप लिख लीजिए, बाद में आपके काम आएगा, and then we will discuss इस चीज के बारे में. ठीक है? अच्छा, शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ एंड लाइक दिस सेशन एंड गिव इट अ बूस्ट. वेलकम अनसेन, यश, like this session so that we will get a boost. And now let's start with question number 1. I hope you have joined. Code is 1113527, session for indefinite integration, and we will do 10 must do questions. By through this 10 question we will learn all the concepts and the techniques how we will solve. Let's start. On a screen, question number 1. So just one player have joined. I will wait for 1 more minute, guys. Share it with your friends. All the 8 people in the chat section, those who are present over here, quickly join this session. 1113527. तो नाम भी बता दो किस किसने ज्वाइन कर लिया है. यहाँ पर एक रेड रोज है और एक बर्थडे केक है. तो एक कौन कौन है? चलिए तो स्टार्ट करेंगे हम लोग. लेट्स वेट फॉर 30 more seconds. जिन लोगों को नहीं पता कैसे ज्वाइन करना है, दे जस्ट हैव टू लॉग इन टू www, 3 बार w बेटा, .menti.com. code, you will be asked a code, and code you will write down 1113527. ये आपका कोड है और हम स्टार्ट करेंगे 10 very important. This is not code or code. We will start 10 very important questions that you should do. So your time for the first question starts. So question number 1 is find the derivative of the function 4x minus 7. The simplest question in your indefinite integration that you will come across, and we will learn what exact formulas, what exact method, what exact techniques we should go for. So both of you have answered. Answer is option number A. Very good. But still let's check what exactly we need to write down the answer. First thing was antiderivative. What is the meaning of antiderivative? Antiderivative means something which is the reverse process of the derivation. So we will say the reverse of derivation. And what is the meaning of reverse of derivation? That means we are talking about integration. This is integration. And why this is antiderivative, why we call it as the reverse of the integration, reverse of derivation. The process integration means summing up. We are bringing all the things together. We are joining it. Okay, so we can say integration is like joining, and derivation means breaking. So चीजों को तोड़ना और चीजों को जोड़ना दोनों एक दूसरे के रिवर्स प्रोसेस है, इसलिए हम इसको ऐसा नाम देते हैं. पहला कॉन्सेप्ट. नाउ क्वेश्चन इज व्हाट इज द इंटीग्रेशन, एंटी डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन ऑफ fx.
This is the symbol of fx, where we will write down the upper limit. Here we will write down the upper limit, and here we will write down the lower limit. ठीक है, यहां पर आप क्या लिखते हो, but we are not having any limits over here, so we are rubbing this particular portion. And when there is no limits, what we will say? When there is no limit, we do say that this is indefinite integration. Okay, so indefinite integration का मतलब क्या हुआ? When we are not talking about the limit, we are just adding and we are just writing down the general form of the answer. और जब लिमिट लगती है, we will call it definite. Now question is the integration of 4x minus 7. Now the rule of the integration and the rule of differentiation are approximately same for algebra. What does it says? When we are having addition of the two functions, subtraction of two functions, we can separately integrate them. But remember, there must be dx over here. Now this is the real meaning. 4x dx minus integration of 7 dx. So we can separately integrate the two functions which are in the addition or subtraction. There's one more thing which was in the differentiation also, was this particular thing that if a scalar number, a constant number is in the multiplication, we can take it out of the process. Doesn't matter integration or doesn't matter differentiation. So we can write down our answer as integration of 4 multiply integration of x dx minus 7 dx integration. Now you know the answer, but what exactly you have used, that integration of x power n dx is equals to x to the power n plus 1 divided by n plus 1. If we will say the reverse process, if you will check what is the differentiation of x power n, दोनों को अगर हम एक साथ पढ़ते हैं तो देखो यहां पर डिवाइड था, यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा, लेकिन 1 माइनस, सो n. Here it is x power n into x. अगर आप ध्यान से देखोगे, it's x power n into x. We will say x power n divided by x. So we will write down x power n minus 1. You can see the whole process is exactly reverse. तो दोनों बातों को आप ध्यान से पढ़िए, दोनों चीजों को ध्यान से एक साथ लगाइए. Together, if you will do differentiation and integration, you will not have any kind of confusion in the formulas. Same category formula, write down together. Clear? तो ये आपका हुआ क्वेश्चन नंबर 1. और यहां पर आपका क्या था, ये 4 times of integration of x dx power is 1 minus 7. We can take 7 outside and we can say just x power 0 dx, because x power 0 is 1. So 7 we have taken out. नमस्ते भावेश. So ये आपका क्या आ जाएगा, 4 times of x to the power x power is 1, so power में plus 1 to what is in the power divided by the same number, minus 7 power is 0 plus 1 in the power, 0 plus 1 is 1, divide by what is in the power 1, so divide by 1. This is your answer. But since we are reading indefinite integration, do not forget to use the sign C. अब आपके पास लॉजिक होना चाहिए. You will write down in the chat section, in the comment section, why. अब ये आप लोग बताओगे कि क्यों हम लोग यहां पर C लिखते हैं, यहां पर what is the reason behind that we are writing here C. ये हमने डिस्कस किया, आप लोग मुझे बताओगे. Now question number 2 on a screen. अगर अभी तक आपने ये सेशन ज्वाइन नहीं किया है, कोड इज 1113527. तो 2 लोग हैं, सर्वरी एंड बेल. बेल कौन है बेटा? छोटे लाल आप हो. चलिए तो सेशन आगे बढ़ाते हैं. दोनों ने बिल्कुल सही आंसर दिया. अगला क्वेश्चन ऑन ए स्क्रीन. अब 4 लोग हो चुके हैं. अब आपको बढ़ाने हैं बेटा नंबर, ठीक है. इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर ई टू द पावर एक्स क्यूब dx. तो यहां पर भी हम 2-3 कॉन्सेप्ट सीखेंगे. देखो हर एक क्वेश्चन में हम चाहते हैं कि मैक्सिमाइज कर दें अपनी लर्निंग को. कम क्वेश्चन ज्यादा लर्निंग इज अवर वे. कि कम टाइम में सर कम वक्त बचाए, कैसे प्रिपरेशन करें, ऐसे करेंगे साथ मिलकर. 40 सेकंड बची हैं. एक पर्सन ने आंसर कर दिया है. अच्छा, कुछ लोग 11th के अंदर भी हैं बेटा. आप लोग सीख लेना इंटीग्रेशन कैसे करते हैं. लास्ट 30 सेकेंड्स. 2 लोगों ने आंसर किया है. और जो लोग सेशन ज्वाइन कर रहे हैं, कोड उनके लिए मैं फिर से लिख दूंगा.
1113,527. Okay, great. So 4 people have answered. 2 correct, 2 wrong. Let's check who these 2 people are. So Bearfur, Contessa and Bhavesh, तो इन दोनों ने बिल्कुल सही आंसर किया है. हसलर अपना खाता खोलेंगे. चलो बहुत बढ़िया. अब देखिए इंटीग्रेशन क्या है आपके सामने कि इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर e to the power x cube dx. If you have joined the sessions of integration, okay, if you have joined the session of integration earlier where I have discussed the complete theory, I have said one thing: if this does not looks like that this does not looks like from the standard formula, अगर ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला से नहीं मिलता जुलता है तो हम क्या करेंगे? वी विल यूज, पहली टेक्निक क्या थी? डायरेक्ट फॉर्मूला, स्टैंडर्ड फॉर्मूला. स्टैंडर्ड फॉर्मूला टेक्निक डज नॉट वर्क ओवर हियर, सो देन वी विल जंप टू substitution method. I will use the substitution method and I will look. My numerator is having 2 terms. One of the term is going in the substitution. So what I have to do? I will look over here on the x square. I will look over here on the x cube. What do I find out? That x square is basically approximately equals to the differentiation of the x cube. क्या ये एग्जैक्टली होगा? नहीं. इट्स डिफरेंशिएशन ऑफ x पावर n is n x to the power n minus 1 3 minus 1. This is how these two terms are related. So I said okay, fine, but now from here I will get whatever is in the question. Question में क्या है? x square dx. Fine, and I can assume, अब देखिए ध्यान से, if I will assume x cube is equals to t, and if I will differentiate both the side, now I will differentiate, I will have dx cube by dx is equals to dt by dx. I can write down, okay, so I can write down this particular thing as a dt by dx. लिख सकते हैं हम इसको, ठीक है. यहां पर हम क्या करेंगे? I can write down over here that this is dt by dx. And what is this? What is this? This is a differentiation of x cube, ठीक है, and this is a dt by dx. And now what we are going to do? We will convert x square dx. X square dx will be equal to 1 by 3 dt. Okay, so whenever standard formula does not work or it is not clearly कि we will apply or not, apply the method of substitution, and in substitution you will check the relation between the given terms. So we have find out the relation, and to connect the relation, to establish a relation, write down a new variable x cube equal to t. 3x cube by dx is 3x square and dt by dx in this form, and then connect what over here is. Now what exactly it will become? X square dx, देखो ध्यान से, x square dx is 1 by 3 dt. So here 1 by 3 dt, and e to the power x cube is t. And now we can say that 1 by 3 we can take outside, because if you are having integration of fx dx is equal to k is a constant f dx. What is k? K is a constant. ये exactly same property है आपकी differentiation के अंदर. अगर आपको याद हो, k df by dx is equals to k df by dx. ये हमने पढ़ा है. सेम चीज यहां पर हो रही है. 1 by 3 इंटीग्रेशन ऑफ e पावर t dt, एंड नाउ दिस इज अ स्टैंडर्ड फॉर्मूला, आंसर ऑफ विच इज e पावर t. व्हाट इज t? t इज x क्यूब प्लस c. मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, why we apply c in case of indefinite integration. You can answer by the end of the session. सोचना इसके बारे में. और यहां पर हमने क्या क्या किया अभी तक? Differentiation of e power x by dx is also e power x, and integration of e power x dx is also e power x. Okay, and apply the constant number. I hope. तो हमने डिफरेंशिएशन भी देख रहे हैं, इंटीग्रेशन भी देख रहे हैं, so that we will have a comparison, because we need to compare to have the better understanding of both of these. Now question number 3 on your screen. कोड अगर आपको नहीं पता है 1113,527. नए बच्चे जो अभी अभी ज्वाइन कर रहे हैं, लेट हो चुके हैं, रिया बेटा ज्वाइन कर लो फटाफट से.
और जितने लोगों ने अभी तक हाई नहीं लिखा, बेटा आते हो कम से कम एक बार मालूम चलना चाहिए कौन कौन आया है। क्वेश्चन नंबर 3 ऑन योर स्क्रीन, लेट्स स्टार्ट। करेंगे फटाफट से नया सवाल। इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² प्लस 2x प्लस 2 dx इज इक्वल्स टू। इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² प्लस 2x प्लस 2, यहां पर दो कॉन्सेप्ट सीख लेंगे हम लोग, दो कॉन्सेप्ट सीखेंगे। वन इज अ स्पेशल टेक्निक ऑफ द इंटीग्रेशन और एक डायरेक्ट फॉर्मूला भी। ओके, सो 2 of you are correct and 3 are wrong. Let's see who has given the right answer. So Bhavesh and Sarvari have given the right answer. दो लोग, देखो टफ कंपटीशन है टॉप 4 लोगों में, पोजीशन बार बार स्विच हो रही है। सर्वरी इज द फास्टेस्ट अमंग ऑल। वेलकम रामचरण रेड्डी। नाउ व्हाट वाज द क्वेश्चन, लेट्स सी। क्वेश्चन नंबर 3 वाज इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² प्लस 2x प्लस 2 dx, यही क्वेश्चन था आपका। नाउ व्हेनेवर यू आर हैविंग 1 polynomial, and especially I would say whenever you are having a quadratic in our denominator, always make perfect square of it. Okay, always make perfect square of it, and when you will do so, when you will follow this particular thing, then what you will write down, 1 this is a perfect square. Create perfect square out of it, and you can write it down as x² plus 2x plus 1 plus 1. So basically whenever you are having a quadratic equation in the denominator, what you have to do, break it in such a way that you will take out a perfect square out of it. Okay, and this particular thing will become integration of 1 क्या बनेगा आपका ये integration of 1 it was x² plus 2x plus 1, this will be 1 plus x plus 1 square plus 1 square. Clear? And now I will write down the formula over here. क्या formula होगा बेटा? That integration of 1/x² plus a² dx, or let's call it t. It will be better if you will understand with respect to t, because ultimately we have to substitute over here. So it was 1/t² plus a² dt will be equals to, कितना होगा इसका बराबर बताइए, tan इनवर्स, कितना होगा, tan इनवर्स t by a, यही होगा बेटा, क्या होगा, ठीक है। तो यहां पर आप लोग, और यहां c लगाना मत भूलना। और अगर हम इंटीग्रेट डिफरेंशिएशन में पढ़ते हैं तो डिफरेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स, differentiation of tan inverse t upon dt will be equals to 1/t² plus 1. मिलते जुलते हैं, थोड़ा ध्यान से देखोगे ये मिलती जुलती चीजें हैं। और यहां से आप क्या करोगे, you will put x plus 1 is equals to t. यहां से आपने डिफरेंशिएट किया, you will have, यही तो मैंने पूछा है बेटा भावेश, कि आप लोग सोचना, सेशन के लास्ट में डिस्कस करेंगे कि ये t क्यों लगाते हैं। dt by dx, dx by dx plus d1 by dx is equals to dt by dx, dx by dx is 1 and d1 by dx is 0, and ultimately we can say dt by dx is equals to 1 or dt is equals to dx. dt is equals to dx. तो यहां पर आपने क्या किया, we have calculated dt is equals to dx and x plus 1 is equal to t. Your question will become t² plus 1 dt, which will be equals to tan inverse of t by 1 is t, n plus c. What is t? T is x plus 1. T is x plus 1. So answer for this question will be, क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और सी लगाना मत भूलना, मैं आपसे बार बार पूछ रहा हूं, यू शुड हैव अ लॉजिक बिहाइंड वाई सी, और नहीं आता है जस्ट स्टे टिल द एंड ऑफ द सेशन, आई विल डिस्क्लोज वाई वी अप्लाई सी ओवर हियर। क्लियर? अब करेंगे अगला क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, करिए।
क्वेश्चन नंबर 4, integration of sec square log x upon x dx will be equals to integration of sec square log x dx. This is not a direct formula. When you cannot apply direct formula, jump to the substitution, and while substitution, check how you can relate it other terms like log x and x. Do they have any relation? Okay, so 4 people are correct, 3 are wrong. किस किसने आंसर सही किया इसको? भावेश, बेल, राम एंड सेट. बेटा नाम भी बता दो, कौन है ये? बेल कौन है, सेट कौन है, और चलो बाकी का नाम तो मुझे पता है. नाउ क्वेश्चन इज दिस, इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर log x upon x dx. As I have said, before you apply integration or do any question, think over this. Do you have any direct formula? No, you do not have. Okay, Ria is well. Okay, so you do not have direct formula. If you do not have direct formula, next step is substitution. To substitute, check the relation. Log x and x, yes, they are having a relation. What is the relation? If I will assume log x equals to t, and then I will differentiate, what I will have? Differentiation of log x with respect to x is equal to differentiation both the sides, obviously. This differentiation is 1 by x is equal to dt by dx, and from here I can say that 1 upon x dx is equals to dt. So I can substitute other part also. Now 1 by x dx will become dt. Okay, 1 by x dx will become dt. Clear? And this will become sec square t. And what is the formula of sec square t? याद है आप लोगों को? Integration of sec square t is tan t. अब यहीं से हम एक और बात सीखेंगे कि इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर, नाउ दिस इज द डायरेक्ट फॉर्मूला, dt इज इक्वल टू tan t. और जैसा हमने बोला दैट डिफरेंशिएशन, अच्छा एक काम करो, डिफरेंशिएट, इफ यू विल डिफरेंशिएट बोथ द साइड्स, यू विल हैव d tan t अपॉन dt इज इक्वल टू सेक स्क्वायर टी. अगर आप दोनों को ध्यान से देखोगे, इफ यू विल लुक क्लोजली, यू विल गेट द आंसर yc. मैं बार बार पूछूंगा यहां पर, ये आप गौर से देखिए, दोनों चीजों को आपको आंसर मिलेगा yc. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन स्क्रीन, फटाफट से देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 5. अब ये 50% सेशन कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि अब ये 5वां सवाल आपके सामने है. देखते हैं कौन लगा पाएगा इस क्वेश्चन को. इंटीग्रेशन ऑफ sec x डिग्री tan x डिग्री. लास्ट 50 सेकेंड्स. Okay, so correct answer is given by 3%, and answer is option number D, and correctly given by भावेश, सरवरी एंड राम. ये 3 लोगों ने आंसर किए हैं. क्वेश्चन क्या था आपके सामने? सेक स्क्वायर, ये हमने कर लिया. अच्छा, सेक x डिग्री tan x डिग्री, इसका आंसर क्या आपका? डी ऑप्शन है. अब देखना क्यों आया ऐसा आंसर और आप लोगों ने कहां गलती की. इंटीग्रेशन ऑफ sec x डिग्री tan x degree dx. Now it is clearly you will mention in your notes that degree is not an SI unit. SI unit is your radian, and we will whenever you will have integration, you will solve integration or differentiation, you have to convert degrees in. आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा डिग्रीज को किस चीज के अंदर? सबसे पहले तो उसको अजम्पशन ले लो. ओके, आपको कन्वर्ट करने का डिग्रीज को इन योर रेडियन. सो व्हेन यू विल कन्वर्ट डिग्रीज इन द रेडियन, क्या आएगा आपका? 180 डिग्रीज इज इक्वल्स टू कितना होता है? पाई रेडियन. सो x डिग्री विल बी इक्वल टू
पाई एक्स बाय 180। हम हर चीज को एसआई में डील करते हैं। आई बात समझ में? क्या बन जाएगा आपका? पाई एक्स बाय 180 इज इक्वल्स टू टी। हाँ आया? This is equals to t. Now you can differentiate both the sides. I have converted degree in the radian. I have assumed x degree is equal to t. X degree is pi x by 180. I have also converted, and now proceed. What exactly will happen over here? This becomes sec t, and this will become tan t. But we do not know the value of dx. We have to calculate it. Now differentiate both the sides, and when you will differentiate both the sides, you will have pi by 180 is equal to dt by dx. What do we want? We want the value of dx. So from here, dx will came out as 180 upon pi dt. ये आपका बन जाएगा. And apply over here sec t, tan t, sec t, tan t, and in place of dx I will write down 180 upon pi dt. 180 upon pi is a constant, so I will take it outside, and dt. आई बात समझ में? And now this is a direct formula. 180 upon pi sec t, and what is t? T is x degree plus c. यस एग्जैक्टली भावेश। इसको और अच्छे से समझेंगे कि क्यों ऐसा होता है। नहीं पूरा सही नहीं है, लेकिन डेफिनेटली आई विल रिप्लाई द मोर करेक्ट आंसर। आपका कुछ हद तक ठीक है कि यस दिस इज अ वन ऑफ द वे टू थिंक, लेकिन एग्जैक्ट नहीं बोलूंगा आंसर को। 180 अपॉन पाई सेक एक्स डिग्री। अच्छा आपने आंसर किया है तो आप खुद जज करना कि सर जो मैंने आंसर दिया था और जो आपने आंसर दिया दोनों में डिफरेंस है या एग्जैक्टली सेम है। ठीक है, अच्छा ये आपका हुआ ऑप्शन नंबर डी। और यहां से आपकी लर्निंग क्या हुई ये मैं आपको लिख के बताऊंगा। पहली लर्निंग यहां से आपकी ये हुई क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर, दैट ऑलवेज कन्वर्ट x डिग्रीज इन रेडियन। ऑलवेज कन्वर्ट डिग्रीज इन रेडियन। ऑलवेज कन्वर्ट डिग्रीज इनटू रेडियन। पहली चीज तो ये। दूसरी बात अगर आप चेक करोगे इंटीग्रेशन ऑफ sec t tan t is equals to sec t plus c, and if you will differentiate this, you will have d sec t upon dt will came out as sec t and tan t आंसर। दोनों चीजें सीख रहे हैं हम लोग, इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन। अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर 6 ऑन योर स्क्रीन। अच्छा अभी कंपटीशन में कितने 6 लोग हैं। आई वांट ऑल ऑफ यू टू शेयर दिस सेशन। 50% सेशन हो चुका है, 50% में और कंपटीशन बढ़ाओ अपनी तरफ से। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आएगा इन द नेक्स्ट 5 4 3 2 1। क्वेश्चन नंबर 6, इंटीग्रेशन ऑफ sec पावर 6 अपॉन cos पावर 8 dx। नो डायरेक्ट फॉर्मूला, थिंक ऑफ सब्स्टिट्यूशन। देखिए खुद सोचो आप। 50 seconds left, 3 people have answered। 45 44 43 42 41 5 लोगों ने आंसर कर दिया है, 6 लोगों ने आंसर कर दिया। वेरी गुड। तो 20 सेकंड में पूरा सवाल हिला दिया, लेकिन सही है सिर्फ एक का। तो आई एम नॉट श्योर कि आप लोग क्या कर रहे हो, व्हाट इज योर सोल्यूशन। आई विश आई कैन सी योर सॉल्यूशंस। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है दैट इंटीग्रेशन ऑफ, क्या था ये? इंटीग्रेशन ऑफ साइन पावर 6 x cos power 8x. Now can I apply direct formula? No. Can I substitute? Yes, I can substitute, but to substitute I need to check relation of these terms. Now first thing is, what do I know? Over here I know two things, that sine theta
upon cos theta is equal to tan t. मुझे दो thoughts आए. I have got two thoughts from here. Sin theta upon cos theta is tan t, and second thought is that there is a relation between sin square theta and cos square theta, and that relation is sin square theta plus cos square theta is 1. That means either I can change cos in sin, sin in cos, or I can convert first these thing in the form of tan. करके देखते हैं. This will become sin 6x. Okay, so देखो, we are never sure what exactly will work because there are many approaches of a question. I'm just trying with the first one. If this will work, that's completely fine. If this will not work, I will jump to the second one. ऐसे लगाते हैं बेटा, ऐसा नहीं होता है कि मैं पहली बार में सोचूं and everything will be clear. No, never. This never happens with me. This will never happen with you. And if you are expecting a wrong thing कि सर पहली बार में सवाल लग जाए, नहीं बेटा, ऐसा तब होगा when you will practice a lot. Okay, sin 6 cos 6 and cos square. You will note down over here a power m into a power n is equal, ये आपकी दूसरी लर्निंग है, a power m plus n. This is why. And now from here I can convert the whole question as 10 power 6, and there is no proper relation. There is a relation, but the better relation will be between tan and sec. And do I have sec? Yes. Here we can write down 1 upon cos square as sec square x. The whole thought process I have told you. Now, is there a relation? Yes, there is a relation. If I will substitute tan x equal to t, if I will substitute tan x equals to t, I can create the other part. Okay, so you have to substitute in such a manner that if I will differentiate my substitution, I will create the other remaining part. Okay, I can create the remaining part. Differentiation of tan x is sec square x. I have created it, dt by dx. Now I can see there it is sec square x dx. So let's cross multiply. You will have sec square x dx is equals to dt. So in the last calculation you can write it down as dt. आप इसको dt लिख सकते हो. So the whole question will become 10 power 6 means t power 6. Sec square dx will become dt. ये आपका क्या बन जाएगा बेटा? ये आपका dt बन जाएगा. Okay? Yes, UV, yes, it's a Menti. I'm explaining question number 6. तो अगर आपको ज्वाइन करना है बेटा, आपको पता है कैसे ज्वाइन करना है. कोड इज 1113527 इज इक्वल्स टू, लगाइए फॉर्मूला, t पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c इज इक्वल्स टू t इज 10 पावर इज 7 upon 7 plus c, and this is why your answer was option number D. I hope you do not have to remember each and every question. You just have to learn how exactly we need to solve and what exactly is the thought process. Question number 7 on your screen. So Bhavesh was the only person who have given the right answer. बहुत बढ़िया. तो देखो, अब अगर आप रोज आते हो तो मुझे जानने में आता है कि देखो भावेश हर मेंटी के अंदर आता है एंड दिस गाय परफॉर्म्स वेल. तो आप रोज आइए, मैं आपको बताता हूं कि हाउ वी कैन लर्न. अच्छा, भावेश 11 से 12 से है, तो ऐसा नहीं है कि आप 11th में होकर 12th की क्वेश्चन नहीं लगा सकते हो. लगाइए, बस आपका करना क्या है, आपको यू जस्ट हैव टू लर्न ईच एंड एवरीथिंग ओवर हियर. सीखो करो, सीखो और करो, ये तरीका होता है. क्लियर? आजा करिए. लास्ट 50 सेकेंड्स. 6 लोगों ने आंसर किया है. बहुत अच्छा क्वेश्चन है. और मैं आपको, हाँ, अगर आप नहीं सोच पाओगे तो मैं आपको बताऊंगा कि व्हाट इज द थॉट प्रोसेस. लर्न करो, सीखो. 8 लोगों ने कर दिया है आंसर. 30 more seconds. 9 people have answered. Very good. And correct answer is given by 4 people. What was the question? और ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है. मार्केट मार्क कर लो इसको बेटा,
क्यों मार्क कर लो कि ये मुझे बहुत अच्छा क्वेश्चन लगता है और मैं कह सकता हूं कि ये ट्रिकी क्वेश्चन है। ट्रिकी इसलिए है, लेकिन हम इसको ब्रेक करेंगे बाय थॉट प्रोसेस। देखिए, डू आई हैव स्टैंडर्ड फॉर्मूला? फर्स्ट थिंग इज, डू आई हैव स्टैंडर्ड फॉर्मूला ऑफ दिस? नो, I don't have a standard formula for this. I have said if it is not a standard formula, second is substitution. Now to substitute, I need to look two terms, but here I can say this is just one. I do not know what to substitute, because if I will substitute this one, I need to create it again. मुझे फिर से बनाना पड़ेगा. Okay? So let's do it. Assume कर लेते हैं e power x is equals to t. If I will assume so, what I will have? If I will differentiate this, because this is the only substitution I am thinking of, but clearly I am very clueless कि this will create something, but this is the only option. Differentiate it. Okay? Differentiate it, you will have dt by dx, and then you will have differentiation of e power x is e power x is equal to dt by dx. And now I will ask you, what is e power x? What is e power x? E power x is equals to t. And from here I can substitute this part. I have created this one. What is the purpose of the substitution? Is create other things. Clear? So now this will become integration of 1 upon e power x plus e power minus x is equals to 1 upon e power x. So if e power x is t, I can say e power minus x is 1 upon t. So this will be 1 upon t. And in the last, you can see what exactly is dx. If you will calculate over here, you will find out that dx is equals to 1 upon t dt. आपको क्या मिलेगा? 1 upon t dt. करके देखते हैं, चलो। तो ये क्या हुआ? 1 upon t dt is the dx. Now let's solve it. And when you will solve it, you will come out as t into t square. 1 into t is 1. अब देखिए बेटा, अब ये फॉर्मूला बन गया. व्हाट इज द फॉर्मूला? tan इनवर्स ऑफ t. व्हाट इज t? इट्स e पावर x. क्वेश्चन बहुत सिंपल था, लेकिन मैं आपको प्रॉब्लम बताता हूं. बहुत बढ़िया आपको ये लर्निंग हो सकती है कि इफ यू विल थिंक इन ईच एंड एवरी क्वेश्चन हाउ टू डू, you will keep on thinking, beta, you will never get the answer. This is not an approach to mathematics. You will think what you can do. When you will think over this, you will get the answer if you have learned all the things. अगर आपकी पूरी proper learning है, you will have all the tools. What you can do का मतलब होता है tools. What do you know? Okay, what you can do, आप क्या कर सकते हो? What do you know? आप क्या जानते हो? और ये आप क्या जानते हो, इस बात पर मैटर करता है what is your learning in the session. ठीक है? अब अगला क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 8. चलिए, तो भावेश, सरवरी, यूवी एंड हसलर बे. अरे बहुत बढ़िया, मुझे लगा हसलर आप चले गए, खाता नहीं खोला, लेकिन चलो बहुत अच्छा. हसलर, सेट, यूवी फास्टेस्ट है, बेल, रिया, राम, सरवरी एंड भावेश. अभी टफ कंपटीशन चल रहा है बिटवीन राम एंड भावेश. तो देखते हैं हु विल बी द विनर. क्वेश्चन नंबर 8 ऑन अ स्क्रीन. इट्स इंटीग्रेशन ऑफ 1 upon x plus 3x minus t. I will tell you how exactly we should do these kind of questions. No formula मगर हर एक चीज के पीछे लॉजिक होगा. Every single question will have a logic, will have a thought process, and if you are solving question without thought process तो दिक्कत है. Last 40 seconds. 1 upon x plus 3 x minus 3. 4 people have answered. 30. अच्छा, कोड अगर इसको नहीं पता है, It's 1113527. क्योंकि काफी नए लोग आ रहे हैं और जा भी रहे हैं, तो कोड लिख लेना बेटा.
Last 10, 15, 13. Last 10 seconds. 5 people have answered. बचे हुए 5 लोग, सभी आंसर कीजिए. 5, 4, 3, 2, 1. Time is up. 6 people have answered. And correct answer is given by just 2. What was the question? What is the question? 1 upon x plus 3 upon x minus 3. See, I have said we are having 13 basic formulas. This is my observation that we are having 13 basic formulas. Now, after this, you will definitely come across approximately 20 to 50 formulas, depends upon what kind of person you are. Either you can learn each and everything. But over here, let me tell you what was my thought process. My thought process was, I wish ki kash if it is not multiplication, it is addition. Not like this. Addition in this format. अगर ये ऐसा होता तो I can clearly say, if this is so, I can easily calculate because this is ln, this is ln after integration. Okay, this was my thought process. So what I have checked कि what is the relation between what do I want and what is the relation between that I have. जो मेरे पास है और जो मुझे चाहिए, दोनों में क्या relation है, and you will find out that this particular thing. अब ये कैसे करोगे? Let's just cross multiply. ये equal नहीं है. If you will cross multiply, you will have x minus 3 plus x plus 3. Here you will see 3 and 3 will get cancelled and the coefficient of x are same, they will get added. I have committed a mistake. And what mistake is this? If I will have a minus sign over here, I just need to multiply by 6. Now I will conclude what exactly I wanted to say. That if I will just write this thing as integration, let's multiply 6. Let's divide by 6. Okay, x plus 3 into x minus 3 dx. After this, keep this 6 as it is, and instead of writing 6 over here, I will write down it as x plus 3 minus x minus 3. Now, if you are thinking, sir, how you have thought that 6 will be converted to this particular point? No, sorry, I haven't thought in this way. I have thought from here to here. This is a right approach because nobody can think. See, if you are writing 6 in this form, somebody can think, sir, why not x plus 5 into x plus 1? आई बात समझ में? वो इसीलिए because what do we want can be achieved only by this particular method. X plus 3 into x minus 3, and when you will break this particular thing, it will get broke in 1 by 6 outside. Now if you will break, check करो क्या होगा. X plus 3 upon x plus 3 into x minus 3 will be converted to integration of 1 upon x minus 3. And second thing will be converted to minus times of 1 upon x plus 3, and now it's a clear formula. अगर आपको याद हो तो अच्छी बात है बेटा. And formula for this integration is equals to, याद होना चाहिए, this is equals to ln mod x minus 3 minus ln x plus 3. I will also explain, and plus c outside. Ln a minus ln b is equals to ln a by b, ln a by b, and this is your final answer. Option number क्या है बेटा? Option number 1 by 6. Option number D is your answer. Now many of you do not know what is the total learning from this question. Is this particular thing, we can say that integration of log t is dt is equals to 1 by, ये हमने उल्टा लिख दिया, integration of 1 by t dt is equals to log modulus t. Why mod? ये आपको सोचना है क्योंकि इसके बारे में हमने बहुत बार डिस्कस किया है. Why? Here there is no mod, but here we are applying. Similarly,
when we differentiate, when do we differentiate, we will apply over here mod t. ऐसा क्यों बेटा, सोचना इसके बारे में. y मॉडुलस t, log में क्या डिफरेंस है? यस आई विल एक्सप्लेन. यहां पर एक सिंपल सी बात कि log और ln, यहां पर मैं मेंशन कर देता हूं दो तीन चीजें जो आपको log से आनी चाहिए. log a माइनस log b जो हमने लर्निंग की इज log a by b, and one more learning that you need to know in the advance, log a plus log b is equals to log ab, and log in the log if having the base e. What is e? E is 2.7 exponential number. Log with the base e is termed as ln. बस ये फर्क है. And in the whole calculus, whenever it is log, we will assume in the advance that it is ln. ये ln है. Clear? And what was the integration? 1 upon x plus 3 dx. This was the integration. You will assume x plus 3 is equal to t because you do not know what is the direct integration of 1 upon x plus 3. This will come out as dx equal to dt, and this will come out as 1 upon t dt. And this is why your answer is ln t or x plus 3 modulus. Is that clear? Now next question on your screen. देखते हैं. Question number 9. Let's see if we can do it correctly or not. तो अभी तक किसका आंसर? यूवी एंड भावेश हैव गिवन द राइट आंसर. पोजीशन चेंज होंगी बिल्कुल, और पोजीशन चेंज होकर यूवी आ चुका है ऊपर. 6 लोग कंपीट कर रहे हैं, टफ कंपटीशन. नाउ क्वेश्चन नंबर 9 ऑन योर स्क्रीन. लेट्स सी हाउ मेनी ऑफ यू विल गिव इट करेक्टली. वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन, सेम काइंड ऑफ क्वेश्चन. ये हमने आज ही अभी किया है, सीखा है, और यहां से एक नया फॉर्मूला सीखेंगे इंटीग्रेशन का, बेसिक फॉर्मूला. Last 38 seconds. 5 people have correctly given the answer. Value of integration of 10 ln x upon x dx. 20 seconds left. 5 people have given the answer. देखते हैं. ये क्वेश्चन हमने लगाया है एग्जैक्ट सेम फॉर्मेट. अगर आपको याद हो, हिंट sec square ln x upon x, बस उसी फॉर्म का क्वेश्चन. Last 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Time up. 6 people have answered for this question. And out of all, 4 are correct. Now, let's see. अब इसको देखेंगे इंटीग्रेशन. क्वेश्चन नंबर 9, solution on your screen. 10 ln x upon x dx. Now if somebody would have given, the answer will be same, because in the just we have learned that in the case of integration differentiation we will assume that log is having the base e. Okay, now again, is it a standard formula? No, it is not a standard formula. Whenever we are not having standard formula, what we will do, we will apply what we will apply the method of substitution. यहां पर लगाया, but लगाने के लिए I need to check is there any two terms in the whole integration which are connected? Yes, ln x and 1 by x. So I can say the integration of tan t dt. कैसे हुआ ये? Assume करोगे अगर आप ln x is equals to t, differentiate both the sides, you will have 1 by x is equal to dt by dx. Cross multiply, dx by x is equals to dt. dx by x is equals to dt, tan t. अब बात ये है, what is the integration of tan t? Answer, it's ln modulus of the sec t or minus ln cos t. जैसा आपको अच्छा लगे, it doesn't matter, both answers are perfectly fine. Now what is t? T is ln x, so this is why answer is ln sec log x. ठीक है, ln sec log x, log or ln. Now question number 10 on your screen, last question of the day, and I hope इस बार अक्षत, भावेश, युवी, किशन
हसलर, बेंडर, एल्सा, अरे वाह वाह, बहुत बढ़िया नाम रख दो यार, बेंडर, एल्सा, हसलर, ऊपर आ गया हसलर अभी। तो अभी टफ कंपटीशन है बिटवीन भावेश, सरवरी, राम, यूवी एंड हसलर एंड बेल। ये 5 कॉम्पिटिटर अभी हैं, बाकी सेट, बेंडर, एल्सा एंड दिस इज स्टिंगिलियस। अरे बहुत अच्छा नाम रखा है, इतना बड़ा नाम है स्टिंगिलियस। क्वेश्चन नंबर 10 ऑन योर स्क्रीन, let's see if we can answer or not. Cos x minus sin x upon cos x plus sin x. अच्छा, एक और इसके बाद बात करते हैं इंपॉर्टेंट। 4 people have answered in the first 10 seconds cos x minus sin x upon cos x plus sin x. चेक करते हैं। डायरेक्ट फॉर्मूला नो, सब्स्टिट्यूशन सेकेंड मेथड। थर्ड मेथड हम बात करेंगे अगले सेशन में, एंड दैट मेथड इज आइलेट। Last 30 seconds, 6 people have answered. ये हार्ड है क्वेश्चन, अरे नहीं, अब देखना क्यों हार्ड नहीं है। If the thought process is clear, no question will be hard. 20, 25, last 19, 17. Hurry up, this is your last question. इस क्वेश्चन के बाद हम एक इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करेंगे। 7, 6, 5, 4, 3, 2, 7 people have answered, 2, 1. Great. And correctly answered by only 2 people. अभी 2 लोग कौन हैं देखने वाले हैं हम लोग, and who is the topper of the session. Question was cos x minus sin x upon cos x plus sin x. This was the question. Now you are saying question is difficult. I am asking you thought process is clear or not. Direct formula, no. Substitution, what is the process of substitution? Is connect the two terms. Do we have two terms? Yes, this one and this one. Can we connect? I do not know, and for that I need to differentiate. मुझे differentiate करना पड़ेगा. So I will think that cos x minus sin x, either I can differentiate this, but if you will differentiate, there are two ways. Either assume numerator as t or assume denominator as t. आप मान के चलिए when it is not a log function, your denominator will go in the substitution. I repeat, whenever you are not dealing with the log or inverse trigonometric function, in all the cases your denominator will go in the substitution. ठीक है, ये आपकी थोड़ी सी हिंट। तो यहां पर हमने क्या assume किया, that sin x cos x sin x equal to t, differentiate minus sin x plus cos x is equal to dt by dx, and from here you will have, see, my target is to create a numerator. This is the reason why I am choosing denominator. But in the case of log and ITF, when you will choose numerator, you will create denominator. This is why we will choose numerator over here. ठीक है, तो यहां पर क्या बनेगा, cos x minus sin x into dx is equals to dt. Your whole question will convert into integration of, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, integration of this is t and this is dt is equals to ln modulus t. What is t? T is cos x plus sin x, ln cos x plus sin x. So this question, now I think option number D is your answer. ठीक है, अब यहां पर ये हमने बात देखी। अच्छा, एक और मेथड आपका होता है आइलेट। आइलेट के बारे में हम लोग बात करेंगे, आज हमने बात नहीं की है, लेकिन हमारे पास 3 सेशंस हैं इंटीग्रेशन के। सो इन द नेक्स्ट सेशन we will take isolate method, because isolate method is very very important and we generally use वैसे तो ज्यादातर आपका इंडेफिनिट में यूज होता है, बट आई विल शो यू इट्स यूज इन द डेफिनेट इंटीग्रेशन वाला मेथड। अगला वीडियो कब आएगा आपका, आज क्या है बेटा, मंडे। अगला वीडियो कब आएगा, ऑन ट्यूसडे। ट्यूसडे कब है, 27th ऑफ जनवरी 2020, 11 AM से 12 PM। 1 घंटे का लेक्चर होगा, किसके ऊपर होगा, डेफिनेट इंटीग्रेशन, 10 क्वेश्चन दैट यू नीड टू डू। ये पहला नोटिफिकेशन है। दूसरा, कल है 26 जनवरी, on 26 Jan we are having a very important video which is for 11th and for both 12th। वीडियो किसके ऊपर है, वेवी
कर्व मेथड। यहां पर हम लोग सिर्फ ये नहीं सीखेंगे व्हाट इज वेवी कर्व मेथड, वी विल ऑल्सो लर्न द लॉजिक वाई, क्यों हम लोग ऐसा ड्रॉ करते हैं, एंड हाउ टू डू इट एंड वाई वी आर डूइंग इट। ये दोनों बातें हम सीखेंगे इस सेशन के अंदर। क्लियर? अच्छा, अब हम बात करते हैं एनरोलमेंट प्रोग्राम के बारे में कि इफ यू हैवंट ज्वाइन and if you are having any kind of confusion that we should go or we should not go, I'm just giving you comparison कि किस लोगों को यहां पर जाना चाहिए, कितने लोगों को नहीं जाना चाहिए। हाँ, लीडर बोर्ड देखते हैं बेटा, 5 मिनट आप मुझे 2 मिनट आप मुझे दीजिए। पहली चीज, एनरोलमेंट क्यों करना है, क्यों नहीं करना है। देखो यहां पर हम लोग एनरोलमेंट करने के बाद वी विल हैव 5 to 6 लेक्चर्स पर डे, और यू कैन से दैट 5 to 6 आवर पर डे, इसमें बात करते हैं हम लोग। यहां पर भी आपके 5 से 6 घंटे के लेक्चर्स होंगे, लेकिन यहां पर वी आर कवरिंग 6 सब्जेक्ट्स, हियर वी विल कवर 4 सब्जेक्ट्स उतने ही टाइम में। सो यू कैन से मोर टाइम टू अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट, ज्यादा फोकस होगा, हम लोग ज्यादा टाइम दे रहे हैं उस चीज के अंदर, तो डेफिनेटली वी विल परफॉर्म वेल। दूसरी चीज, यहां पर एक रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है बेटा। यहां पर कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहां पर आए, मन किया तो बैठे, मन नहीं किया, ज्यादातर लोग 2 मिनट में 3 मिनट में चले जाते हैं। क्यों? मैं आपको बताता हूं, क्योंकि साइड में ना एक वीडियो चल रहा होता है। कौन सा वीडियो? किसी के नाचने का, किसी के गाने का, और किसी के कॉमेडी का, या किसी के रोस्ट का, आपका फेवरेट रोस्ट वाला कोई होगा, तो इन सब का वीडियो चलता रहता है, और इसके कारण से आप क्या करते हो, आपका ध्यान जो है ना बड़ा कमजोर है बेटा, और 2-3 मिनट के बाद आप सोचते हो सर पढ़ाई, लेट मी टेल यू, स्टडी पढ़ना सबसे ज्यादा बोरिंग काम हो सकता है अमंग ऑल द एक्टिविटीज, बिकॉज इट टेक एफर्ट। हाँ, इट टेक एफर्ट, इसीलिए ये बोरिंग होता है, और इसीलिए हमारा कंसंट्रेशन नहीं बनता और हम चले जाते हैं इसके अंदर। यहां पर ऐसा होगा नहीं, यहां पर एक रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है, बिकॉज आपका ध्यान भी है, एंड सेकेंड थिंग, यहां पर आप पे करते हो बेटा। यहां पर आप क्या सोचते हो, फ्री में आए हैं, चला भी जाऊंगा तो क्या खो दूंगा, खोओगे तो आप यहां पर भी, लेकिन यू गाइज विल नॉट लीव ओवर हियर, और इसीलिए यहां पर जो बच्चा आता है वो पूरा 1.5 घंटा बैठता है, और यहां पर आपको मालूम है आपकी पोजीशन क्या है। तीसरी बात, एनवायरमेंट। रही बात एनवायरमेंट की, यहां पर आपको एक एनवायरमेंट मिलेगा, यू विल क्रिएट अ स्टडी ग्रुप फॉर योरसेल्फ। 5-6 लोग आपको मिल जाएंगे जो आपकी तरह होंगे, दैट विल जिनका वाइब मैच करेगा। यहां पर आई डो नॉट नो हाउ यू आर मेकिंग फ्रेंड्स, यू कैन नॉट मेक स्टडी फ्रेंड, स्टडी सर्कल, ये आपकी चीज हुई। दूसरी बात मैंने आपको बता दी है, यहां पर एनवायरमेंट में कुछ और भी है, हवाओं में कुछ और है बेटा, और वो हवाएं आपको बहाकर ले जाती हैं कहीं और। तो आते हैं वेदांतु पर, यूट्यूब को चैनल पर, चले जाते हैं नूरा, और फिर चले जाते हैं कैरी, और फिर चले जाते हैं डिप्रेशन में कि सर क्या करें, सर मैथ्स नहीं समझ में आ रहा। बेटा कहां से समझ में आएगा, इन दोनों ने आपका चैन छीन लिया है, इसीलिए आपको समझ में नहीं आता, मैथ्स डिफिकल्ट लगता है। अगला पॉइंट, और क्यों करना चाहिए, यहां पर एक फ्रीडम होगी आपके पास। किस तरह की फ्रीडम? स्टूडेंट फ्रीडम इन टर्म्स ऑफ मेनी केसेस। कौन कौन सी फ्रीडम होगी आपके पास? पहली बात, फ्रीडम होगी कि यहां पर यू कैन चूज योर फैकल्टी, यहां पर यू आर सेलेक्टिंग योर फैकल्टी, या तो यहां से पढ़ूंगा। अच्छा, दोनों में अंतर कुछ नहीं है वैसे, बस फर्क है यहां पर आपके पास 20 फैकल्टी होंगी स्ट्रक्चर्ड वे में, यहां पर आपको ढूंढना पड़ेगा कि चलो आज आदित्य सर से सीखता हूं, नहीं, वो ज्यादा अच्छे पढ़ाते हैं, वहां चले जाता हूं, फिर वहां चले जाता हूं, मानिए 1 साल में आपको आज तक अच्छा फैकल्टी नहीं मिला होगा, आप ढूंढ रहे हो, आपको ढूंढना नहीं है बेटा। यहां पर वी विल अलॉट द बेस्ट 20 फैकल्टीज, यू कैन चेंज अकॉर्डिंग टू योर। यहां पर आपको पता है 4 लोग हैं, 4-5 लोग हैं मैथ्स के, 4-5 लोग दूसरे सब्जेक्ट के, चूज अकॉर्डिंग टू देम, और वहां से आप सेलेक्ट कीजिए, ज्यादा फोकस होगा। अच्छा, यू कैन चेंज अकॉर्डिंग टू योर नीड, कभी आपको लगता है कि चेंज करना है, आराम से चेंज कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर लैंग्वेज, स्पीड, वाइब, जो भी आपका है। यहां पर आप शेड्यूल फिक्स कर सकते हो, मतलब यहां पर आपका 11 से 12 होता है, यहां पर आपकी जब मर्जी हो तब आप कर पाओगे। क्लियर? सेम चीज यहां पर यूट्यूब पर ही, यू कैन वॉच रिकैप, यहां पर भी आप रिकैप देख सकते हो बड़े आराम से, सेम फैसिलिटीज ओवर हियर।
यहां पर हम लोगों ने टेलीग्राम ग्रुप बनाया, यू कैन हैव द नोट्स, यहां पर भी आपको नोट्स मिलेंगे, क्लियर। लेकिन यहां पर मैं आपको बोलूंगा एलाबोरेटिव नोट्स और मिलेंगे, और हम लोग यहां पर एलाबोरेटिव फॉर्म में नोट्स बनाते हैं, ठीक है। यहां पर आपको ज्यादा चीजें मिल पाएंगी। अब इसके बाद अगर आप मुझसे पूछोगे कि 99% कहां पर आएंगे सर, ये बताओ सर, हटाओ सारी चीजें, एनरोलमेंट और यूट्यूब बोथ, दोनों में 99% आएंगे। आस्क मी अ करेक्ट क्वेश्चन कि सर वेयर I will have a more probability, I would say एनरोलमेंट की ज्यादा प्रोबेबिलिटी है, और प्रोबेबिलिटी क्या होती है बेटा आपको पता है, ठीक है। तो यहां पर हमें ज्यादा प्रोबेबिलिटी होती है। इसके अलावा अगर आप बात करोगे यू आर हैविंग डुअल मोड प्रोग्राम, मतलब यूट्यूब पर अगर आपको डाउट आ रहा है यू हैव टू वेट, और अगर आप एनरोलमेंट में होते हो, डाउट आया, यू आर हैविंग 3 फैसिलिटीज, वन इज क्लासरूम टीचर, मतलब आई एम टीचिंग ओवर हियर एंड इन द बैकग्राउंड अ क्लास टीचर विल बी अलॉटेड टू यू, सो मोर पर्सनलाइज्ड फॉर्म, आपको ज्यादा पर्सनलाइज एक्सपीरियंस मिलेगा, और वहां पर आप डाउट पूछ सकते हो, क्योंकि कुछ बच्चों को बड़ी शर्म आती है, पहले मुझे भी आती थी बेटा, क्लास में डाउट पूछने में ना मुझे बड़ी शर्म आती थी, एंड देन आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम आई थॉट कि क्लासरूम में पूछने में शर्म नहीं करनी चाहिए, लेकिन फिर भी आई अंडरस्टैंड कि वी ऑल हैव डिफरेंट बैकग्राउंड्स, हम लोग अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं, तो किसी में शर्म होती है, किसी में नहीं होती है, तो वी आर टेकिंग केयर ऑफ ईच एंड एवरीवन। यहां पर आप बिंदास डाउट पूछिए, जितना गंदा पूछ सकते हो डाउट, उतना गंदा डाउट, जितना टफ, जितना सिंपल, जैसा भी आपका डाउट है। यहां पर एक और चीज, क्लासरूम के अंदर डाउट सॉल्विंग, आफ्टर क्लासरूम वी आर हैविंग वीकेयर, एंड आफ्टर क्लासरूम वी आर हैविंग अ ओपन टेलीग्राम ग्रुप। अभी जहां पर आप जुड़े हो दैट इज टेलीग्राम चैनल, चैनल में यू आर नॉट अलाउड टू रिप्लाई, अदरवाइज क्या होगा ना, सब स्पैम करेंगे। यहां पर करो बेटा, मैं हूं वहां पर, मैं आप सबको संभाल कर अच्छे से टेलीग्राम पर बात करें। लेकिन अब इसके बाद तो ये सारी चीजें हैं, क्रैश कोर्स की हम बात करेंगे, माइक्रो कोर्स की हम बात करेंगे, बेसिकली ऑल द ओवर हियर वी कैन से वी विल ट्राई टू हैव 7 टाइम्स रिवीजन फॉर ईच एंड एवरी क्वेश्चन, ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट, सारी चीजों को हम बात कर सकते हैं एनरोलमेंट प्रोग्राम के ऊपर, बिकॉज वी आर हैविंग मोर टाइम ओवर देयर। तो अब आपको करना क्या है, व्हाट यू जस्ट हैव टू डू, इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपके पास 2 लिंक होंगी, लिंक नंबर 1, लिंक नंबर 2। लिंक नंबर 2 बेटा ये है टेलीग्राम की। व्हाट इज गोइंग ऑन टेलीग्राम, टेलीग्राम पर आपकी डेली होती है क्विज, जो मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं, अप्रोक्सीमेटली सम 50 to 100 पीपल अप्रोक्सीमेटली यहां पर जवाब देते हैं, ठीक है। और लिंक नंबर 1 इज फॉर द एनरोलमेंट, मैं आपको बोलूंगा जाइए, क्लिक करो, चेक करो व्हाट एग्जैक्टली यू आर गोइंग टू डील विथ, और जो प्राइसिंग वगैरह है वहां पर आपको मेंशन कर दी जाएगी। जहां तक मुझे याद, इट्स 2666 ये प्लान है आपका। अच्छा, वहां पर 1 महीने का प्लान होगा, 3 महीने का भी होगा, फुल टाइम का भी होगा, तो जैसा आपको अच्छा लगे गो फॉर इट। अभी 3 महीने बाकी हैं एग्जाम में, तो यू कैन गो फॉर इट, चेक करो एक बार कैसा, हाउ यू विल एक्सपीरियंस इन द फील्ड ऑफ दिस वेदांतु, अच्छा लगेगा आई होप। अच्छा, यहां पर एक और बात मैं बोलने वाला था कि अगर आप एनरोलमेंट के लिए जा रहे हो, लिंक क्लिक करने पर एक बार ध्यान रखेंगे कोड, ये कोड किस लिए मैं आपको बताऊंगा, ADAPRO, याद हो जाएगा बड़े आराम से, AD फॉर आदित्य, A फॉर आर्या, प्रो इज द सब्सक्रिप्शन प्लान, और ये कोड करने पर आपको 20% ऑफ मिल जाएगा, ठीक है। और अगर आप नहीं अप्लाई करते यू विल नॉट हैव द दिस 20% ऑफ। तो आज के लिए इतना ही। अगर इफ यू फील दैट दिस इज अ कंप्लीट वर्थ सेशन फॉर यू पीपल, अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो, सो प्लीज डू नॉट फील शाय, बिल्कुल कंजूसी मत करना बेटा, लाइक करने में और अपने दोस्तों के साथ शेयर करने में। like this particular channel Vedantu Commerce, share this video to your friends, to your mates, to your competitors, और अगली वीडियोस के लिए बहुत जल्दी हम एक नई सीरीज के साथ आने वाले हैं, so to get updation subscribe this channel। आज के लिए इतना ही, till then take care, bye bye, see you all in the next class।